I'll just say a few words in Urdu for the benefit of the media here, because I believe that Tharparkar is or was the most backward district in, I have to speak in Urdu, सबसे पसमानदा इलाका था सूबा सिंध का, और आज से कोई 30 साल पहले यहाँ पे कोयला दरियाफ्त हुआ था, और उस वक्त की हुकूमत ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ने थरपारकर की डेवलपमेंट के लिए काम शुरू किया। कोयले की डेवलपमेंट और उसके हवाले से जो थरपारकर में प्रोग्रेस आएगी। अनफॉर्चुनेटली वो काम उस तेज़ी से नहीं बढ़ा, और जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस विज़न को आगे बढ़ाया और को थोड़ा कुछ बताया भी था प्रेजेंटेशन में जब बता रहे थे, इस स्टडी की प्रेजेंटेशन जब की थी, कि एक तालका मिट्टी जहाँ पे ये कोल रिजर्व्स मौजूद हैं, वहाँ पे थर फाउंडेशन ने काम किया है, और वहाँ पे उसके असरात, उसके रिज़ल्ट्स सामने आए हैं। ये स्टंटिंग का प्रॉब्लम पानी ना मुहैया होने की वजह से सबसे ज़्यादा होता है, और हुकूमत सिंध ने थर के अंदर, मुझे एग्जैक्ट नंबर इस वक्त याद नहीं है, चेयरमैन PND शायद मुझे मदद कर सके, लेकिन सैकड़ों की तादाद में RO प्लांट्स लगाए हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते रहते हैं ऑफ एंड ऑन, बट हुकूमत सिंध उस जगह पे जहाँ पानी मुयसर नहीं था, पानी पहुँचा रही है। हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो मिट्टी का अस्पताल एक डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल के होने के हवाले से उसमें वो सारी सहूलियात, बल्कि उनसे ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी मिट्टी आते हैं। स्कूल एजुकेशन हो, वहाँ पे हमने थर फाउंडेशन के साथ हुकूमत सिंध ने सिटीजन्स फाउंडेशन के स्कूल बनाए हैं, वहाँ अस्पताल एक बन रहा है जो कि इंशाअल्लाह ताला जल्द मुकम्मल होगा। तो याद नहीं बिल्कुल ख़ास, शायद हमने उसमें हम ख़वातीन को, जो प्रेग्नेंट हामला ख़वातीन हैं, उनको स्टाइपेंड देते हैं एक, कि वो विज़िट करें, अपनी विज़िट्स जो आएँ तो कॉम्पनसेट किए जाते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ ये ख़वातीन काम भी करती हैं, तो उस दिन के लिए उनको सर ट्रांसपोर्ट प्लस जो लॉस ऑफ अर्निंग है उसके लिए कॉम्पनसेट किया जाता है, ताकि वो टाइमली अपनी जो प्री नेटल चेकअप्स हैं वो कराएं, और उसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद भी उसकी पूरी जो इम्यूनाइजेशन है और उसकी देखभाल है, उसके लिए जो सप्लीमेंट्स हैं वो हम देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत सिंध इस पे काम कर रही है, लेकिन हमने इस पे, और इसलिए कि ये ऐसा प्रॉब्लम है स्टंटिंग का, बाकी आपने बताया था, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि सिंध के अंदर हम वी आर डूइंग probably at the bottom as compared to the other provinces। हमने इस पे काम करना है, बिकॉज ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। अगर आपकी 40% आबादी स्टंटेड है और उसकी ग्रोथ स्टंटेड है, और यही बच्चे आगे जाके आपकी इकोनॉमी में का जो कंट्रीब्यूट करेंगे, और अगर वो 40% बच्चा उस लेवल पे नहीं आता है तो ये पूरे मुल्क का एक लॉस होगा। तो हम इस पे बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसको और तेज़ करेंगे। मैंने ये सारे उर्दू में, I'll just repeat, concisely repeat what I have said in Urdu. The government of Sindh has taken several initiatives to mitigate the sufferings of local community by providing health facilities, undertaking health projects, providing food, diffusion of literacy, child and maternity centers, employment for skilled and unskilled workers. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Honorable President, International Ombudsman Institute and Ombudsman for Western Australia, Mr. Chris Field. Honorable Ombudsman Pakistan and President, Asian Ombudsman Association, Mr. Ijaz Ahmed Qureshi. Ombudsman Sindh, Mr. Ijaz Ali Khan Sahab. Mr. Qasim Sumro, Chief Secretary Sindh, Dr. Suhail Rajput,
Chairman P&D Board, Sayyid Hassan Naqvi, and I need to acknowledge the dignitaries who are sitting in front of me, starting with Mr. Mumtaz Shah, the former Chief Secretary, Mr. Shahnawaz Tariq, the Ombudsman for Protection Against Harassment of Women in Workplace, Mr. Asad Ashraf, the erstwhile Ombudsman, Sindh, Ms. Rebecca Poole, the Principal Assistant for Mr. Chris Field, Ms. Rehana Ghulam Ali, Khabar Jamil Saab, the Federal Insurance Ombudsman, and last and not the least, Mr. Anwar Haider, who I had the honor of working with when I joined government service. He was the first person who guided me through how the government works. Thank you for coming here today. Provincial Secretaries, the Ombudsman Office, the ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. First of all, let me welcome Mr. Chris Field, President IOI, on his visit to Sindh. I'm glad that he was able to make it for this important function. We here in Sindh are honored to have you with us today. Stunting is a serious issue and its consequences are far-reaching, as it not only impairs the development of a child as a normal person, but simultaneously causes socio-economic loss to the society. Therefore, a comprehensive, multi-sectorial strategy should be devised to meet this challenge at national and provincial level. Sindh government is conscious of this issue and assigns highest priority to health and education. As a policy, all the relevant partners have been taken aboard. Policy is subject to periodic review and assessment to overcome the multifaceted problem. I am confident that the Government of Sindh, in collaboration with all stakeholders, has a strong resolve to overcome this critical problem, and I show our full support and cooperation in this regard. I once again thank Mr. Chris for being with us here today. As I said, we are truly honored to have you here. I am grateful to the Provincial Ombudsman, the Planning and Development Department, and the International Ombudsman Institute for preparing this report, which will help us in overcoming the stunting problem and give us guideline to resolve this problem. We will present this report to the Provincial Cabinet also and have it approved so that it can be implemented and the recommendations are followed. Once again, thank you all for coming here. Prevention सारी की हैं, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त था कि ये एक ताल के तक महदूद हैं अभी इस वक्त, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमने अब हुकूमत के हर प्रोजेक्ट की जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, उसके अंदर ये लाजम करार दिया है कि वो जो थर का मॉडल है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसको फॉलो करें। जहाँ तक स्टंटिंग का जिक्र है, इसी कमरे में आज से कोई 7-8 साल पहले उस वक्त वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आए थे और इसी कमरे में हमने स्टंटिंग के लिए बात की थी। वर्ल्ड बैंक का भी बहुत ज़्यादा कंसर्न था और हमने एक्सेलरेटेड एक्शन प्लान शुरू किया था। और मुझे याद है एजाज खान साहब व्हेन ही वाज चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वो उस वक्त भी काम कर रहे थे। उसकी प्रोग्रेस मैं एक्नॉलेज करूँगा थोड़ी स्लो है। हमें उसके बाद इश्यूज़ काफ़ी आते रहे, कोविड और फिर फ्लड्स की वजह से हमारा काम थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। लेकिन इस वक्त फिर हमने वो जो जिक्र किया था अपनी प्रेजेंटेशन में कि पहले 1000 दिन, द फर्स्ट 1000 डेज आर इम्पॉर्टेंट। बच्चे की कंसेप्शन से उसके तकरीबन 3 साल की उम्र तक का जो टाइम होता है, जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सपोर्ट हम देते हैं, उसके लिए हमने बड़े, और थरपारकर से वो शुरू किया हमने, थरपारकर, उमरकोट और तीसरा डिस्ट्रिक्ट। मुझे I feel honored to launch the report on assessment of malnutrition, stunting in District Tharparkar at the Chief Minister's house today. This report has been prepared by the Research and Training Wing, Planning and Development Department, the International Ombudsman Institute, and the Provincial Ombudsman Sindh.
The Ombudsman institution is committed to provide prompt redressal to public grievances without creating any financial burden and ensuring administrative justice to all citizens. A cursory glance at the Ombudsman's performance demonstrates its adherence to its basic objectives. Ombudsman Sindh contributes in improving service delivery by taking issues and problems being faced by the people and through research facilitate their resolution, thus helping the government agencies in pointing out gaps. Recently, the Ombudsman Sindh carried out a study on girl education and came up with realistic and actionable recommendations which have been approved by the Government of Sindh and sent to the Education and Literacy Department for implementation. I've been informed that the IOI under the leadership of Mr. Chris Peel has been collaborating with its members on such critical issues. I thank the IOI and its president for such initiatives. The Ombudsman Sindh, in collaboration with IOI and PND, has undertaken a study on malnutrition and stunting in Thar district, giving insight and analysis on the subject and suggesting ways and means to overcome this challenge. Government is already engaged in tackling this problem and has launched various programs and allocated adequate funds. Not only that, Sindh government has been collaborating with donor agencies to mitigate the severity of this problem.